Hello friends, today we will do problem set 2. Okay, the MCQs are very easy, they are solved and given to you already. We'll directly move to the second question. The height of we have to find out the height of an equilateral triangle having side 2a. Okay, so this side is 2a, so this is 2a, this is 2a, and this is also 2a, so this will be a, this will be also a. Now in triangle ADB, this is 90, this is 30, this is 60. So side opposite to 60 degree will be root 3 upon 2 times hypotenuse. Therefore root 3 upon 2 times hypotenuse. This is how you get the answer. Okay, question number 2 is very easy. It's taught to you already. Question number 3, it's taught to you already. Will be faster because it is a lengthy one, but it's an easy one. Okay. Okay, in triangle PQR, PQ is given, QR is given, PR is given. Is PQR a right angle triangle? If yes, which angle is 90 degree? Now the longest side is 8. So 8 square, sorry, root 8 square is 8. So the remaining two sides are uska nikala. So you get by converse of Pythagoras theorem, PQ equal to, these are triplets. Now see, PQ is 8, correct? So if you draw the triangle, what will you get? If PQ is root 8 and that is the hypotenuse, obviously angle R will be the right angle, isn't it? So therefore opposite to the hypotenuse is PQ is 90 degree, therefore R is equal to 90 degree. See, you can visualize on your own. We move to the next one. In triangle RST, S is given, T is given, RT is given. Just 30, 60, 90 you have to apply and directly find out the values. Okay. These are some easy questions, so we are skipping them and going ahead. Find the diagonal of a rectangle whose length is 16 and area is 192. Now length is given 16 and area is given. So what is area of rectangle? Length into breadth. Therefore area of ABCD is AB into BC. So you have 192 equal to 16 into BC. So you get BC. Now once you get BC by Pythagoras, can you find out AC? Yes, you can find out. That's what you have to do. In the next question, find the length of the side and perimeter of equilateral triangle whose height is root 3. Length of the side and perimeter of triangle whose height, only the height is given to you. Now again, you know A equal to B equal to C equal to 60 degree. ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, करेक्ट. इन ट्रायंगल BAD, this is 90 degree, this is 60, so this will be 30 degree, correct. Now AD equal to root 3 upon 2 times hypotenuse, side opposite to 60 degree. Okay, see, this is 60 degree, isn't it? This is 30 degree. Side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. Therefore root 3 equal to root 3 upon 2 into A. Root 3 cut. A is equal to 2. Therefore perimeter of triangle ABC is root 3 into 3 into side. Therefore you get the perimeter. Question 6. Directly you have to apply Apollonius. There is nothing to teach. AB square plus AC square is given. We have to find out AP. Correct. So AB square plus AC square is 2. AP square plus 2. PC square. PC will be how much? BC is given to you 18. Correct. So PC will be 9. Correct. So half of 18, that will be 9. 9 ka square 81, and hence you have to solve. Okay. Next, in triangle ABC, equilateral triangle, PC is 1 upon 3 BC. If AB is 6, find out AP. So now see, ABC is equilateral, PC is 1/3 of BC, that is 2. So PC is how much? We got PC as 2. Now, in triangle ADB, D is 90, B is 60, D is 90, B is 60, correct. ये 60 degree है. Now angle BAD is 30 degree, remaining angle, therefore it is a 30, 60, 90
triangle. Now AD will be how much? Root 3 upon 2 times the hypotenuse. So AD is equal to root 3 upon 2 times AB. That is root 3 upon 2 times 6. That is 3 root 3. AD मिल गया अपने को 3 root 3. Now BD is how much? Half of AB. That is 3. Now BC is what? BD plus DP plus PC. That is 3 plus DP plus 2. You are not supposed to write like this. ऐसा लिखोगे B dash D dash P and T dash P dash C. Okay. So you get DP to be 1 centimeter. Now in triangle ADP you have to apply Pythagoras. देखो in triangle ADP ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे. You know this. Can you find out AP? Yes, you can find out. देखो AD पता है, DP पता है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्टली यू विल गेट AP square is 28 and therefore you can find out the value of AP. Now question number 8. This information is given to you. This is also A and this is also A. So how can you write it? PQ equal to QR equal to PR. Everything is A. Now see. We have to prove PM equal to PN equal to root 3 into A. Now, this question I have changed the solution to be easy. Whatever is given to you in the notes, that is also okay, but this is easier than that. So I have put this solution here. Okay. Now in triangle PMR, see in triangle PMR, if you see carefully in triangle PMR, this is A. This part is A and this part is also A. Therefore PQ is the median, isn't it? So in triangle PMR, PQ is the median. Therefore PM square plus PR square, PM square plus PR square equal to 2PQ square plus 2QR square. You can take MQ also if you want. Correct? By Apollonius theorem. So you get PM square plus A square equal to 2A square plus 2A square. If you solve it, you will get 3A square. Okay, PM square is equal to 3A square. Therefore PM will be root 3A. What will you write here? Taking square root. ठीक है. Similarly अपने को क्या मिल गया? अभी PM का मिल गया. Now what will we consider? Triangle PQN. देखो इस triangle को लेंगे. Why? Because we want PN also. So what will we take? PQ square plus Pn square is 2PR square plus 2QR square. You can take Rn square also if you want. Correct? Exactly like how we did this. तो तुमको मिलेगा A square plus Pn square is 2A square plus 2A square. सॉल्व करेंगे तुमको Pn भी मिलेगा 3A. Therefore PM equal to Pn equal to root 3A from statements 4 and statement 7. Okay. Let's move to the next one. Prove that the sum of squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides. डरने जैसा कुछ नहीं है. It is a very easy question. Many of them I think they are already thinking of leaving such type of questions for option, but you don't have to do all these things. Okay. तो उन्होंने क्या पूछा है? Prove that sum of squares of the diagonals. Okay. So sum of squares of the diagonals. So sum of squares of the diagonals. What are the diagonals? AC and BD. Okay, is equal to sum of squares of its sides. मतलब AB square plus BC square. Sum of squares of the sides. What are the sides? AB, BC, CD and AD. Okay. Now proof. ABCD is a parallelogram and the diagonals bisect each other. Now OA is OC. OA equal to OC, that is half of AC, and OB is equal to OD, that is half of BD. Correct? Because in a parallelogram the diagonals bisect each other. Now in triangle ABC, देखो डरना नहीं है. What do we want? AB square. We want AB square, BC square, CD square. Correct? कैसे मिलेंगे? अपोलोनियस से मिलेंगे ना हमको. AB square plus AD square is 2AO square plus 2BO square. Correct? AB square plus BC square is 2OB square plus 2OA square. Correct? इसमें अपोलोनियस लगा है.
Now OB square, OB is what? Half of BD square, OA is what? Half of AC square. इसको सॉल्व करेंगे, हाफ का स्क्वायर 1/4 BD स्क्वायर, दिस 2 एज इट इज, ये हो गया BD स्क्वायर अपॉन 4, दिस 2 एज इट इज, ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन 4. इसको कट करेंगे, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2, करेक्ट. नाउ मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, तो तुमको क्या आएगा? 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. इन्होंने सिर्फ क्या किया है? BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर प्लस 2A. I hope you understood this step. If you have not understood, you can call me and ask me personally. Okay? कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2 किया है, तो क्या मिलेगा? 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एंड देन दे हैव जस्ट इंटरचेंज एंड रिटर्न. नाउ 2AB स्क्वायर मीन्स ओनली AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, and BC square is nothing but BC square plus BC square. Okay, now AB, BC, AC, AD, sorry, AB, BC, CD and AD, everything is the same. देखो, see, AB square plus AB square, तो देखो ये AB square और ये BC square इधर लिखा हुआ है, AB square, BC square. Now instead of this AB square they have written CD square. Why? Because AB equal to CD, and instead of this BC square they have written AD square because BC is equal to AD. Q, क्योंकि it is a parallelogram. So in place of this AB square we have written CD square, in place of this BC square we have written AB square, AD square, क्योंकि ये equal है. Okay, if you have still you have a doubt you can ask me. Moving to the next question. Pranali and Prasad started walking to the east and north respectively from the same point. After 2 hours, the distance between them is 15√2. Find the speed per hour. तो from this point they started walking. एक जने ईस्ट को गया, एक जने नॉर्थ को गया, correct? So OA, OB, they reached A and B respectively. Okay, so let their speed be x kilometer per hour because they started with the same speed. Okay, same speed they have given here, they have mentioned same speed, so let their speed be x kilometer per hour. So Pranali will take a distance from O to A in 2 hours, तो उसका कितना हो गया? स्पीड कितना है? x, और टाइम कितना है? 2 hours. Distance is what? Speed into time. So speed is how much? x, time is how much? 2 into x हो गया 2x. Therefore ये कितना हो गया? OA कितना हो गया अपना? 2x. Okay, and what about Prasad? He also 2x, he also took 2 hours with the speed of x, तो उसका भी कितना हो गया? 2x, ये 2x. अभी अपन इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, isn't it? AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे. 15 का स्क्वायर 225, √2 का स्क्वायर 2, ये 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, तुमको मिलेगा 450 अपॉन, इसका मल्टीप्लीकेशन 450 अपॉन 8 इक्वल टू x स्क्वायर. अभी इसका x स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो, इसको कट करेंगे जहाँ तक हम कट कर सकते हैं, है ना. 450 अपॉन 8, you have 450 अपॉन 8, that is nothing but 2 से कट करो तो 225 अपॉन 4 मिलेगा. अभी इसके स्क्वायर रूट्स हमको पता है, तो क्या करेंगे हम लोग? मतलब पागल के जैसे 225 अपॉन 4 पॉइंट में नहीं लाते बैठेंगे, बिकॉज वी नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ 225 एज वेल एज 4. सो 225 का स्क्वायर रूट 15, 4 का स्क्वायर रूट 2, 15, you get x is equal to 15 upon 2, that is 7.5. Therefore their speed is 7.5 kilometer per hour. Let's move to the next one. In triangle ABC, BAC equal to 90 degree, BL and CM are the medians. See, BL and CM are the medians. Prove that 4BL square, 4 into BL square plus CM square equal to 5 BC square. Okay. So in triangle ABC, BC square is AB square plus AC square. देखो, BC square is
AB square plus AC square. Now M and L are the midpoints, therefore AM equal to BM equal to half AB into, okay. Now in triangle BAL, देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे BAL, what can we say? BL square is BA square plus AL square, correct? But AL is what? Half of AC, तो इसको पुट करेंगे half of AC, ये हो गया AC square upon 4, correct? Now multiply each term by 4, you get 4BL equal to 4AB square plus AC square. In the same way you will take triangle ACM, ये देखो ACM. तुम बोलेगी कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यही ट्रायंगल लेने हैं? देखो तुमको इधर क्या चाहिए? CM स्क्वायर चाहिए. CM स्क्वायर चाहिए तो तुमको ये ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा CM स्क्वायर मिलने के लिए, ट्रायंगल ACM, करेक्ट? सो व्हाट विल यू गेट? CM स्क्वायर इज AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, करेक्ट? सो यू विल गेट CM स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. AM स्क्वायर को लिखेंगे हाफ ऑफ AB द होल स्क्वायर, तो ये हो गया AB स्क्वायर अपॉन 4. अगेन मल्टीप्लाइड बाय 4, यू गेट 4CM स्क्वायर इज 4AC स्क्वायर अपॉन प्लस AB स्क्वायर, करेक्ट? अभी फ्रॉम 2 and 3 ऐड करेंगे 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर. क्यों दिख रहा है इधर 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर? भाई लगने वाला है हमको, तो ऐड करेंगे. यू विल गेट 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ऐसा इसको करो, 5 कॉमन निकालो, यू विल गेट द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. Sum of squares of adjacent sides of a parallelogram is 130 and length of one of its diagonals is 14. Find the length of the other diagonal. Now suppose triangle ABCD is a parallelogram. बहुत easy है ये. देखो OA इक्वल टू OC हाफ ऑफ AC, OB इक्वल टू OD हाफ ऑफ BD, करेक्ट? देयरफॉर ये दोनों 7 है. इसमें अभी हम अपोलोनियस लगाएंगे. देखो OA OC अपने को मालूम है 7 है. नाउ वी विल अप्लाई अपोलोनियस टू इट. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2OB स्क्वायर प्लस 2OA स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर. Now here in triangle ABC, AD is perpendicular to BC, BD is 3CD. Prove that, ये प्रूव करना है. Now we know that BD is 3CD. Now DB plus CD equal to 3CD plus CD. Therefore BC, देखो ऐसा क्यों किया इन्होंने? DB plus CD, why did they do DB plus CD? DB प्लस, क्योंकि वी वांट BC इन द आंसर, तो हमको BC का वैल्यू निकाल के रखा. BC इज 4CD, therefore CD is 1/4 of BC. Okay, you will understand why have we found out this here in the later steps. Now in triangle ADB, देखो ADB ये क्यों लिया? क्योंकि AB स्क्वायर चाहिए. AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, तो फाइंड आउट किया, ये रख दिया. AC स्क्वायर भी निकाला, दिस प्लस दिस. ओके, नाउ देखो तुमको दिख रहा है 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. ये इधर जाएगा तो क्या होगा रे? माइनस होगा कि नहीं? 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर. इसीलिए हमको इधर करना है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. सो वी विल डू दिस माइनस दिस, तो तुमको मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू, इवन यू विल डू दिस माइनस दिस, AD स्क्वायर चला जाएगा माइनस करोगे तो, क्योंकि ये माइनस ही करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, चला जाएगा. तुमको क्या बचेगा? BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, करेक्ट? नाउ BD कैन बी रिटर्न एज 3CD, दिया हुआ है अपने को इधर. BD इक्वल टू 3CD लिख दिया. सो यू सॉल्व इट, यू गॉट 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू 8CD स्क्वायर. लेकिन हमको तो आंसर में भाई CD चाहिए नहीं, हमको BC चाहिए आंसर में. हमको AB, AC और BC चाहिए. सो व्हाट विल वी डू? इंस्टेड ऑफ CD वी विल राइट BC अपॉन 4. इधर निकाल के रखा है. आई हैड टोल्ड यू दैट यू विल अंडरस्टैंड, है ना? तो CD हमने इधर निकाल के रखा है 1/4 BC. दिस वैल्यू वी विल पुट हियर. सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई यू हैड फाउंड आउट दिस. नाउ इफ सपोज व्हाइल सॉल्विंग यू गेट स्टक अप हियर, व्हाट यू विल डू? इसको इक्वेशन 1 दो, ये सॉल्व करो, फाइंड आउट करो CD in terms of BC, and again say put it in equation 1 and solve.
तो BC अपॉन 4, CD को पुट किया BC अपॉन 4, दैट इज BC स्क्वायर अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16, कट दिस यू विल गेट अपॉन 2, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 2 हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In an isosceles triangle, length of the the congruent sides is 13, ये 13 है, and the base is 10. Find the distance between the vertex opposite the base and the centroid. So we have to find out the distance between the vertex opposite to the base and the centroid. मतलब AG निकालना है. Vertex opposite to the base. First try to understand the question. Vertex opposite to the base and the centroid. Okay, so M is the midpoint, BM ये सब कुछ तुमको समझेगा. Now we apply Apollonius theorem, क्योंकि ये मीडियन है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज, सब सॉल्व किया, you will get AM इक्वल टू 12, AM 12. लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, हमको तो AG चाहिए. Now we know that G is the centroid and the centroid divides each medium in the ratio 2:1. तो this is 2 and this is 1, मतलब क्या, AG upon GM is 2:1. But we don't know the value of AG and GM, करेक्ट. हमको तो पता है AM का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पोनेंटो करेंगे, so that we get AM. So we'll do componendo, so that we'll get GM plus AG upon AG equal to 1 plus 2 upon 2. तो AM upon AG equal to 3 upon 2. इसको सॉल्व करेंगे, AM का वैल्यू 12 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, you will get the answer. Okay, let's move to the next one. Okay, in trapezium ABCD, segment AB is parallel to segment DC. ये है ऐसा.